Hello students, welcome back to Untitled channel, Haryana Education Department. Today I am back again to discuss about the second part of solid state. In my previous video, I have discussed about some topics like first topic I have discussed crystalline and amorphous solid. Second topic I have discussed unit cell and crystal lattice. Third topic I have discussed close packing. Today I am going to discuss about the packing efficiency and density of the unit cell. Now first of all, I will tell you what is the meaning of packing efficiency. The percentage of total space occupied is known as packing efficiency. Total space में जो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। इसको हम बहुत एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। आप किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और एक सूटकेस में अपने कपड़ों को पैक कर रहे हैं, तो सूटकेस का जितना पार्ट आपने अपने कपड़ों से कवर किया अपॉन द वॉल्यूम ऑफ दैट सूटकेस multiply by 100, that is known as the packing efficiency. So we were discussing about the close packing. Now in close packing, we have packed the atom tightly and the empty space left between the particles and the space occupied by the particles determine the packing efficiency of that unit cell. We have discussed three types of unit cell: simple cubic lattice, face-centered unit cell, and the body-centered unit cell. So first of all, we will calculate the packing efficiency of simple cubic unit cell. Now, first of all, I will try to revise what is the simple cubic unit cell. In case of simple cubic unit cell, particles are located only at the corners of the unit cell. If we see in this picture, we have located the particles only at the corner of a unit cell. But in case of this unit cell, the particles located at the corner of the unit cell, only 1/8 part of the particle is with this unit cell. Remaining 7/8 part of this particle is out of unit cell. So this particle which we are seeing in this picture, only 1/8 part is there in this picture. Now this 1/8 part of the particle is attached with another 1/8 particle of another corner. So here we are explaining that the edge length of the unit cell is denoted by A. This is the edge length, and it is denoted by small a. The radius of atom is denoted by small r. एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पर पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं, कॉर्नर वाले पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पार्टिकल इस यूनिट सेल के अंदर है, 7/8 पार्ट इस यूनिट सेल से बाहर है। पार्टिकल का रेडियस हम स्मॉल r एज्यूम कर रहे हैं और इस यूनिट सेल की एज लेंथ को हम a एज्यूम कर रहे हैं। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें, इसमें ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं और अगर हम इनके सेंटर्स को मिलाते हैं तो a है that is equal to 2r. Here a is the edge length and small r is the radius of atom. So the radius of an atom is half the side of simple cubic unit cell. तो ये रिलेशन आपको लर्न होना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एज लेंथ होती है वो रेडियस का डबल होती है, बट ओनली इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस पूरे यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज ए क्यूब। और ए की जगह पर अगर हम 2r, जो रिलेशन हमने ये ड्राइव किया a इज इक्वल टू 2r, अगर हम a की जगह पर 2r प्लेस करते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आ जाता है 8r क्यूब। अब ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था
नंबर ऑफ पार्टिकल इन द यूनिट सेल 1/8 पार्ट इस पार्टिकल का इस क्यूब के अंदर है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इस यूनिट सेल में कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास 1 आता है। 1/8 इंटू 1, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास 1। नाउ अगर हम सभी एटम्स को स्फेरिकल मानकर चल रहे हैं और सभी एटम का रेडियस एक जैसा है जिसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, और एक एटम का जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट करते हैं बाय द फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब एक एटम के वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है, और ऐसे पार्टिकल इसमें कितने हैं 1। तो टोटल जो वॉल्यूम है वो पार्टिकल्स का कितना आ गया 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, एंड दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल into 100. Now volume occupied by atoms in case of simple cube is 4/3 pi r cube. So 4/3 pi r cube upon volume of unit cell is 8 r cube into 100, and it comes out 52.4%. So in case of simple cubic unit cell, the packing efficiency is 52.4%. Next, we will calculate the packing efficiency of face centered cube. फेस सेंटर्ड क्यूब, हम इसको पैकिंग को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल देते हैं। इन केस ऑफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग द यूनिट सेल इज जस्ट लाइक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मींस हमने पार्टिकल्स को कॉर्नर पे भी रखा है और पार्टिकल्स को हर फेस के सेंटर पे भी रखा है। अगेन पार्टिकल के रेडियस को हम r एज्यूम कर रहे हैं और क्यूब की जो एज लेंथ है इसको हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं। लेकिन फेस सेंटर्ड क्यूब के अंदर जब पार्टिकल फेस के सेंटर पर आ जाता है तो जो कॉर्नर्स के पार्टिकल हैं वो किसको टच कर रहे हैं, फेस के पार्टिकल्स को टच कर रहे हैं। तो ये फेस का पार्टिकल है, ये हमारे पास कॉर्नर्स पार्टिकल हैं। अगर हम इन सबके सेंटर्स को मिला देते हैं तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल बन जाती है दैट इज डिनोटेड बाय ABC। ये A और जो C है दैट इज द सेंटर्स ऑफ एटम। सेंटर्स ऑफ एटम, इसमें से दो सेंटर्स कॉर्नर के हैं और एक जो सेंटर है वो फेस के सेंटर का है। तो दिस इज अ परपेंडिकुलर ट्रायंगल ABC। Here the radius of atom is again small r and edge length is again denoted by a small a. But in case of face centered cube, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, in this case AB is equal to radius of this atom, diameter of this atom, and radius of this atom. So in this case, AB is equal to R, radius of one atom, diameter of second atom means 2R, then again the radius of third atom. So in this case, AB is equal to 4R. Now as it is a perpendicular triangle, so in this case, AB square is equal to AC square plus BC square. Now AC square is edge length, it is denoted by A. BC is again edge length, it is again denoted by A. So AB comes out root 2A. Now but AB is equal to 4R, तो हम AB की जगह पर 4R को रखते हैं तो 4R is equal to root 2A. This is very important relation between the radius and edge length. ये आपको लर्न करना है कि फेस सेंटर्ड क्यूब के अंदर 4R is equal to root 2A, while in case of simple cube 2R is equal to A. Now in case of face centered cube 4R is equal to root 2A. अगर हम इसको rearrange करते हैं we will get radius is equal to root 2 by 4A. Now we have to calculate the packing efficiency. Again the volume of unit cell that is denoted by A cube, but A is equal to
1 by r is equal to 1 by root 8a. So you can say a is equal to root 8 r. अगर हम a की जगह पर रूट 8 r रखते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ जाता है 8 रूट 8 r क्यूब. नाउ इन केस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेट करना सीखा. देयर आर 4 एटम्स, 6 एटम इन द फेस सेंटर, लेकिन इन एटम्स का सिर्फ 1/2 पार्ट है, और 8 एटम अराउंड द कॉर्नर पर उनका सिर्फ 1/8 पार्ट है. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास कितने आए थे? 4. एक एटम का वॉल्यूम होता है 4/3 r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब. तो टोटल वॉल्यूम्स occupied by atoms is equal to 4 into 4/3 pi r cube, and that is equal to 16/3 pi r cube. Now packing efficiency. Packing efficiency is calculated by the formula volume occupied by the atoms upon volume of unit cell into 100. Now volume occupied by atoms कितना है? 16/3 pi r cube, 16/3 pi r cube. और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है वो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, दैट इज 8 रूट 8 r क्यूब into 100, and it comes out 74%. Now packing efficiency of face centered cube unit cell is 74%. नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, देयर आर 8 पार्टिकल अराउंड द कॉर्नर एंड 1 पार्टिकल इन द बॉडी सेंटर. नाउ जब पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है तो ये कॉर्नर पार्टिकल सिर्फ किसको टच कर रहे हैं? बॉडी के सेंटर्ड पार्टिकल को टच कर रहे हैं. तो हमने इनके सेंटर्स से जब हमने डायगोनल ड्रॉ किया AD, जो कि कहाँ से पास हो रहा है? कॉर्नर एटम से, बॉडी के सेंटर्ड एटम से, अगेन इस कॉर्नर एटम से. तो ये जो AD है, इस AD पर अगेन कितने रेडियस है? रेडियस ऑफ दिस एटम, डायमीटर ऑफ बॉडी सेंटर्ड, एंड अगेन रेडियस ऑफ दिस एटम. सो AD इज इक्वल टू 4r. नाउ ये हमारा परपेंडिकुलर ट्राइंगल था जो हमने पीछे भी ड्रॉ किया था, ABC. Again AB is equal to BC square plus AC square. Now ये हमने पिछली स्लाइड पे कैलकुलेट किया था, AB is equal to root 2a. अब आप इस परपेंडिकुलर ट्राइंगल को देखिए, A, B and D. In this case AD is equal to BD square plus AB square. Now AB is the phase diagonal and this phase diagonal is equal to root 2a. तो AB की जगह पर हमने क्या रखा? root 2a. और BD is the edge length. BD की जगह पर हम क्या रख रहे हैं? a square. So AD comes out root 3a and AD is equal to 4r. ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया. So AD की जगह पर हमने क्या रखा? 4r. 4r is equal to root 3a. ये रिलेशनशिप है रेडियस और एज लेंथ का, बट इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूब. मैं फिर से एक बार रिवाइज करा रही हूँ. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में A इज इक्वल टू 2r. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 4r इज इक्वल टू रूट 2a, एंड इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड 4r इज इक्वल टू रूट 3a. और अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं देन r कम्स आउट root 3/4a. Now the volume of cubic units. Volume of cube तो a cube के इक्वल है, but in case of body centered a is equal to 4r by root 3. ये हमने पीछे वाले स्लाइड में कैलकुलेट किया. Here a is equal to 4r by root 3. तो हमने a की जगह पे 4r by root 3 रखा. It comes out 64r cube upon 3 root 3. Now next हम कैलकुलेट कर रहे हैं अगेन पैकिंग एफिशिएंसी. अगेन सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. नाउ इन केस ऑफ बॉडी सेंटर देयर आर ओनली 2 एटम पर यूनिट सेल.
एक एटम का वॉल्यूम 4/3 आर क्यूब है, तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम दैट इज इक्वल टू 2 into 4/3 pi r cube and that is equal to 8/3 pi r cube. Now packing efficiency is equal to volume occupied by atom that is equal to 8/3 pi r cube upon volume of unit cell that is equal to 64 r cube upon 3 root 3 into 100 and it comes out approximately 68%. So the packing efficiency of body centered cubic unit cell is 68%. 30% of the 32% of the volume is empty space. तो हमने तीनों यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में इट कम्स आउट 52.4%. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में इट कम्स आउट 74% एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी है 68%. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल. डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल मीन्स एक यूनिट सेल जो बना है वो पार्टिकल से मिलकर बना है. पार्टिकल्स का जो मास है अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास ऑफ पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे. फर्स्ट स्टेप, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल. यूनिट सेल का जो वॉल्यूम है वो हम कैलकुलेट करेंगे बाय ए क्यूब. सेकेंड, फाइंड द टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट. नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका क्यूबिक सेल किस टाइप का है. अगर सिंपल क्यूब है तो नंबर ऑफ एटम 1 रहेंगे. बॉडी सेंटर्ड है तो नंबर ऑफ एटम 2 रहेंगे. और अगर फेस सेंटर्ड है तो नंबर ऑफ एटम 4 रहेंगे. तो नंबर ऑफ एटम्स को हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल एन से. थर्ड पॉइंट हमको कैलकुलेट करना है मास ऑफ वन पार्टिकल. नाउ मास ऑफ वन पार्टिकल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. मास ऑफ वन पार्टिकल कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल. सपोज हम कार्बन का एग्जांपल लेते हैं. कार्बन का एटॉमिक मास 12 ग्राम. तो वो 12 ग्राम जो मास है वो कितने पार्टिकल्स का मास है. 6.022 इंटू 10⁻23. तो मुझे अगर एक एटम का मास चाहिए तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी. 12 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर एंड 12 इज व्हाट एटॉमिक मास. सो मास ऑफ वन पार्टिकल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. मास ऑफ वन पार्टिकल दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर. एटॉमिक मास को हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं और एवोगैड्रो नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं. एवोगैड्रो नंबर एन that is equal to 6.022 into 10⁻23. Now we have to calculate mass of unit cell. Mass of unit cell. अगर हम एक पार्टिकल के मास को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास यूनिट सेल का मास आ जाता है. तो मास ऑफ यूनिट सेल दैट इज इक्वल टू मास ऑफ वन पार्टिकल इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल. मास ऑफ वन पार्टिकल अभी मैंने पीछे बताया आपको दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर. और नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन. सो मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू स्मॉल एन into m upon capital M. Small n represent number of particle, capital M represent the molar mass and n represent the Avogadro number. Now we have to calculate the density of the unit cell. Density of the unit cell that is equal to the mass of unit cell upon the volume of unit cell. Now mass of unit cell हमने कैसे कैलकुलेट किया. Small n capital M upon capital M. और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने कैसे कैलकुलेट किया. ए क्यूब. तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस का फॉर्मूला है स्मॉल एन एम अपॉन एन ए क्यूब. फिर से रिवाइज करा रही हूँ. स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल. और कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. मोलर मास. और कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है. एवोगैड्रो नंबर. और ए रिप्रेजेंट कर रहा है एच लेंथ. Next, density of the unit cell. Let us take an example of the density of the unit cell. How we will calculate the density of unit cell. Here is the one question. Silver crystallizes. Silver metal
it crystallizes in a face-centered cubic structure. सिल्वर मेटल का जो स्ट्रक्चर है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है. फेस सेंटर्ड क्यूब मीन्स पार्टिकल कॉर्नर पर है और पार्टिकल फेस के सेंटर पर है. तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने होंगे? 4. The edge length of the unit cell is found to be 408.7 picometer. Calculate the density of the silver. Now here, the edge length is given 408.7 picometer. लेकिन डेंसिटी हम कैलकुलेट करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. तो मैंने पिकोमीटर इसमें कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया. 1 picometer is equal to 10 raised to power minus 10 centimeter. So it comes out 408.7 into 10 raised to power minus 10 centimeter. Atomic mass of the silver m that is equal to 108 gram per mole. ये 1 मोल का एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर रहा है 108 ग्राम. एवोगाड्रो नंबर n is equal to 6.022 into 10 raised to power 20. And crystal structure is face-centered. Face-centered means number of atoms per unit cell is 4. So we will apply the formula of density. Density का formula है n small n. Small n represent the number of atoms per unit cell and that is equal to 4. Capital M represent the molar mass. Molar mass of the silver metal is 108 gram. Capital N represent Avogadro number. Avogadro number is 6.022 into 10 raised to power 23. A represent the edge length in centimeter. Edge length here is 408.7 into 10 raised to power minus 10 and we need a volume of unit cell a cube. तो मैंने इसका क्यूब. The density of silver comes out 10.51 gram per centimeter cube. So this is the way to calculate the density of unit cell. Density of unit cell से हम मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Density of unit cell से small m means number of atom per unit cell भी कैलकुलेट किया जा सकता है. और अगर डेंसिटी ऑफ सेल और बाकी डायमेंशंस गिवन है तो हम इससे एज लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो एक न्यूमेरिकल आपको डेफिनेटली रहता है डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल. नेक्स्ट हम फिर से एक बार पैकिंग एफिशिएंसी को रिवाइज कर रहे हैं. पैकिंग एफिशिएंसी में हमने 3 यूनिट सेल के अंदर कैलकुलेट करना सीखा. सिंपल क्यूब. सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होते हैं. सिंपल क्यूब में पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहता है. कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक एटम को जितने एटम टच कर रहे हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है. मैंने आपको रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन बताया था. इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल A इज इक्वल टू 2R. हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना सीखा था. सिंपल क्यूबिक में पैकिंग एफिशिएंसी है 52.47 और जो स्पेस अनऑक्यूपाइड रह जाता है दैट इज 47.6%. Second type of unit cell is body centered unit cell. In case of body centered, number of atom per unit cell is 2, coordination number 8 रहता है और body centered में A और R का रिलेशन है A is equal to 4 by root 3R and the space occupied is 68%, space unoccupied is 32%. In case of face-centered cube, number of atoms per unit cell is 4, coordination number is 12, and the relation between small a and r. Small a is h length and small r is the radius of atom. A is equal to 2 root 2r. Space occupied is 74% and space unoccupied is 26%. Next topic is how we will calculate radius of tetrahedral and octahedral. First we will calculate the radius of tetrahedral. Now tetrahedral void का जो फॉर्मेशन है वो इस फिगर में दिखाया है. tetrahedral void का फॉर्मेशन बॉडी के डायगोनल पर होता है. एक क्यूब के अंदर हम 4 बॉडी डायगोनल बना सकते हैं और हर डायगोनल के ऊपर 2 tetrahedral void बन रहे हैं. जैसे ये पूरा एक बिगर यूनिट सेल है. अगर इस यूनिट सेल को हम 8 यूनिट सेल में डिवाइड कर दें तो इस छोटे से यूनिट सेल के इस डायगोनल पर ये टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन हो रही है.
टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अगर हम 3 एटम्स को नीचे ऐसे रखते हैं और एक एटम को इसके ऊपर रखते हैं तो जो बीच में जो वॉइड क्रिएट होता है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये मैंने फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड की फॉर्मेशन दिखाई है। यहाँ पर पार्टिकल्स, ये जो डायगोनल जा रहा है बॉडी का डायगोनल, इस डायगोनल के सेंटर पर ये आपको क्या दिखाया जा रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस को हम स्मॉल आर अज्यूम कर रहे हैं और ये जो पार्टिकल्स हैं कॉर्नर पर, इन पार्टिकल का जो रेडियस है इसको कैपिटल आर अज्यूम करके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन ड्राइव किया है, रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ वॉइड। Radius of wire is represented by small r and radius of atom is represented by capital. So there is a unit cell and the edge side of the unit cell is denoted by A. Now we take the right angle triangle A, B and C. This right angle triangle A, B and C. This point is C. In this case, AB is equal to AC square plus BC square. AC is the edge length and BC is edge length, that is denoted by A. So this phase diagonal AB comes out root 2A. Root 2A. Now, in case of this phase diagonal AB, we have only two atoms which are in close contact with each other. So this AB is equal to 2R. तो हम अगर AB की जगह पर 2R रखते हैं then 2R is equal to root 2A, or you can say R is equal to 1 by root 2A. Now this is the body diagonal AB. This is the body diagonal AB. Here AD is equal to AB square plus BD. BD is the edge length, that is equal to A square, and AB is the phase diagonal, that is equal to root 2A. So root 2A square plus A square, it comes out root 3A. Now, in case of this body diagonal AD, we have two particles, one at the corner A and another particle at corner D, and this center, this is tetrahedral void. So this AD is equal to 2 capital R plus 2 small r. Small r means diameter of tetrahedral void and capital R means radius of this particle and radius of this particle. So AD is equal to 2 capital R plus 2 small r. Now AD we have already seen, that is equal to root 3A. So 2R plus 2 small r is equal to root 3A. अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, it comes out r plus small r is equal to root 3A by 2. This is our equation number 2. और जो हमने ऊपर ड्राइव किया था, this is equation number 1. अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, r plus r, और इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, ओनली r. तो r plus r divided by r is equal to root 3A by 2 divided by 1 by root 2A, and it comes out small r is equal to 0.225 capital R. The small r represents the radius of tetrahedral void and capital R represents the radius of atom. So the relationship between the radius of tetrahedral void and radius of atom, the small r is equal to 0.225 capital R. So this is about the radius of tetrahedral void. Next come out the radius of octahedral void. पहले octahedral void की फॉर्मेशन को समझते हैं। अगर हमने 4 एटम्स को ऐसे प्लेस किया है, एक एटम हम इसके ऊपर रख रहे हैं और एक एटम हम इसके नीचे रख रहे हैं, जो बीच में ये जो void क्रिएट होता है, this void is known as octahedral void.
This is words. This orange color circle represent octahedral void and these are the particles. तो हमने यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ किया सेंटर्स को टच करते हुए पार्टिकल का सेंटर then void ka center, then again particle ka center. We will get a perpendicular triangle ABC. Now in this perpendicular triangle, AC is equal to AB square plus BC square, where AB represents the edge length that is denoted by A and BC is again edge length that is denoted by A. So AC is equal to root 2A. Root 2A. Now AC is divided by AB. Here AC is equal to root 2A, but this AB जो कि सिर्फ particles के center को touch कर रहा है, this AB is represent the edge length that is A. Now AB is equal to 2R. This AB is equal to 2R and AC is equal to 2 capital R plus 2 small r. तो अगर हम AC की जगह पर 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r प्लेस कर रहे हैं और AB की जगह पर हम 2 कैपिटल R. AB means the radius of circles and in case of AC there is radius of 2 circle and diameter of the void. So 2R plus 2 small r ये हमने रखा AC की जगह पर और AB की जगह पर हम क्या रख रहे हैं that is 2R. And this is equal to root 2. So this is equal to root 2. और जब हम इसको सोल्व करते हैं then small r comes out 0.414 r. यानी void का रेडियस पार्टिकल के रेडियस को 0.414 टाइम्स है. तो अगर हम टेट्राहेड्रल void और ऑक्टाहेड्रल void को कंपेयर करें, टेट्राहेड्रल void का जो रेडियस होता है वो स्मॉलर होता है, वो पार्टिकल के रेडियस का 0.225 टाइम्स है, जबकि ऑक्टाहेड्रल रेडियस में पार्टिकल का void का जो रेडियस है वो पार्टिकल के रेडियस का 0.414 टाइम्स है. So this is about the radius of tetrahedral void and radius of octahedral. So this is all about the packing efficiency and the density of the unit cell. Packing efficiency you will have to calculate in case of simple cubic unit cell, then you have to calculate in case of face-centered cube, then in case of body-centered cube. Then you will have to calculate the density of unit cell. Density of unit cell can be practiced by doing the numericals of NCERT book. There are so many numericals based upon the density of the unit cell. And in the last you can summarize all these packing efficiency and the relationship between the edge length and the radius in a tabular form. This is the relationship between the edge length and the radius in case of simple cube, then body centered cube, and then the face centered cube. Next is the radius of tetrahedral void. This is not given in NCERT book, so you can take the screenshots this tetrahedral void and octahedral void and do note in your notebook. Thank you very much.